Yes, ma'am. Okay. So yeah, जब भी हम कोई एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश सीखी या हिंदी भी सीखी इन आवर चाइल्डहुड, सो वी फर्स्टली वी स्टार्ट विद अल्फाबेट्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट? Right, ma'am. So here today we are also going to, yeah, we're also going to look at the Spanish alphabets. So पहले मैं एक बार बोल के बताती हूँ फ्रॉम ए टू जेड एंड देन जस्ट रिपीट आफ्टर मी व्हाट आई से, ओके, सो दैट हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि स्पेनिश के अल्फाबेट्स कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं. सो इट्स आ, बे, से, दे, ए, एफ ए, खे, आचे, ई, खोता, का, एल ए, एम ए, एन ए, ओ, पे, कू, एरे, एस ए, ते, उ, uve, v doble, x, y, o z o z. Yeah. So just repeat after me. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजों पे ध्यान रखेंगे. हम डे और टे मतलब लाइक ये दो साउंड्स हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं स्पेनिश में. इट ऑफ ट एंड ड, इट वुड बी डे एंड टे, टे ऑलवेज. ओके, सो just repeat after me. A, please open the mic and just repeat after me. Everyone. I need like everyone to be proactive, please. Sure, ma'am. Yeah. A, 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 B, B, A, um, everyone, please. C, C, D, D, A, A, E, A, F, A, F, A, K, K, H, 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 E, E, Khota, Ota, Ka, Ka, L, A, L, A, 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 M, A, M, A, N, A, N, A, O, 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 P, P, Q, Q, R, R, A, S, A, S, A, S, T, T, U, 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 V, V, doble, V, doble, X, X, Y, Y, zeta o zeta. Zeta, 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 Zeta. Zeta. Like we can say, we can pronounce both. Zeta or zeta means jo the sound of Z is both z and s. Both. It could be both z and s. These are only the names of the letters. For example, in English, it is a letter is this, so we pronounce it J. It's the name of that letter. But whenever we see something, it molds according to that. Okay, so it's same. It is the same thing. Okay, so s- someone wants to read that. कोई पढ़ना चाहेगा? अच्छा रहेगा आपके लिए. So can I? Yeah, sure. It's A, A, sorry, A, B, hmm, uh, right, it's right. Say, C, right. then it's D, They, then it's A, A, very nice. F, A, Right, K, right. H, Mm-hmm. E, Kota, Right. K, Ka, L, A, right. uh, then
It's आप एम पे चलेगा सीधा। एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये है डबल एल। स्पेनिश में जहां पर भी डबल एल आता है वहां पर हम उसको एल ए नहीं बोलते एज इन इंग्लिश। वी हम उसको मतलब बोलते हैं ये मीन डबल एल जहां पर आता है वो या का साउंड प्रोड्यूस करता है, या इन हिंदी लाइक और याक याक। सो द साउंड वुड बी या सो ये। ये ओके। ओके सो इसको लाइक थोड़ा माइंड में रखना कि जहां पे डबल एल आता है उसको हम बोलते हैं या, मतलब वहां पे या का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई डबल एल ई था तो ये हो गया ये। ओके नेक्स्ट। ये देन एम ई एम ए एम ए राइट। एन ए एन ए ओ पे पे कू हम्म एरे राइट एस से राइट टे राइट। ओ नेक्स्ट यूवे उवे 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 डोबले वेरी नाइस। इक्विस एक्कीस एक्कीस। एक्कीस देन आई आई क्या बोलते हैं? ए ई ग्रीक। EJ and you mentioned like zeta, right? जेटा जेटा और सेटा। Zeta. जेटा और सेटा। Okay, zeta. ओके ओके सो और कोई पढ़ना चाहेगा? एंड मैं फिर से बोलूंगी कि मतलब हम छोटे बच्चे नहीं है कि एक एक का नाम लेना पड़े, आप खुद से इंटरेक्ट होगे तो आपके लिए ही वो अच्छा। जो एक्टर ऑनलाइन आना, अनन्या का इंटरनेट चला गया। आप कुछ बोल रहे हैं? Shall I do? हाँ या Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Aya, sorry, A, is it Aya or Aya? ये Aya, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V doble, X, Y, Z, Z. ओके। वैसे तो I'll share all the PDFs and PPTs in the group, but if you want to take a screenshot of that, you can take. Okay, so and please make sure that you like make a copy on a notebook and note down everything we study. Like you will be sharing like this video at the last, right? Yeah, recordings Daily also. basis. Okay. Okay. So now there's something very important here. अभी I want कि आप एक स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि और आप एक साइड अपनी तरफ खोल के रखो बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। ओके डू यू वांट दैट? या प्लीज। ओके सो कैन समवन टेल मी कि हमने सी को कैसे प्रोनाउंस किया था? आ बे
Then C. Say. Say, right. So that means हम यहाँ से थोड़ा सा like आइडिया लगा सकते हैं कि से like सी को हम थोड़ा स के साउंड में लेके जाएंगे. Right. Okay. So, but there are two sounds of C in Spanish. Like C produces two types of sounds, which is k and s, like a k or s. Okay. So when C combines with a, o, and u, it produces a sound of k, and when it combines with I and E, it produces the sound of s. Got it? So अभी मेरे को कोई पढ़ के बता सकता है जो ब्लू में वर्ड्स लिखे हैं इन अ ब्लू बॉक्स? La casa. La casa means the house. La casa, यहाँ पे इसको सा सा या ऐसा कुछ नहीं करेंगे. और सी के साथ ए आ रहा है, ए ओ यू, इन तीनों में से कोई भी चीज आएगी तो वहां पे का साउंड ही आएगा. सेकंड इज लकासा के बाद आफ्टर द लकासा Cosa. किसी ने मूवी देखी होगी लाइक ला कासा दे पापेल ऐसे करके, तो ला कासा है वो, राइट राइट. ला कासा. ओके. सो ला कोसा. कोसा मींस अ थिंग. ओके. एंड थर्ड वन. El cuaderno. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एल क्वाderno मींस द नोटबुक. ओके. एंड सी जब आई और ई के साथ कंबाइन करता है, लाइक व्हेन सी कंबाइंस विद आई एंड ई, देन इट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ स. एस. ओके. सो ये क्या होगा? सी ई एन एन सी आई ई एल ओ. Lasina. इट्स सेना. सेना. क्योंकि अभी हमने देखा था ई को ए पढ़ते हैं, ए, राइट. Yep. So it would be cena, la cena, the dinner. And the next word, El cielo. el cielo, means the sky or heaven. Okay, so next is G. So can someone tell me what was the name of the letter G in Spanish? A, B, C, D, E, F, A. K. K. K, right, K. So isme but same as C, G also produces two sounds. One is G and one is K. When G combines with A, O, and U, then it produces a sound of G, and when it combines with I and E, it produces a sound of K. Okay, so can someone read them? El gato. El gato, the cat. Next. El gobierno. Next. Very nice. La La gorra. gorra. Very nice. Next. El la guía. Guía. Gia. Gia. It's Gia. अभी हम पढ़ेंगे ये कि GUI को हमने लाइक गी क्यों बोला. Next. Next. El gimnasio. No. It's El gymnasio gimnasio. because it is combining with I and E. So it is producing sound of K. So el gimnasio. And next. El canero. Canero. Very nice. Okay. कोई भी डाउट हो जस्ट फ्रीली आस्क मी. फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, इन द मिडल ऑफ द सेशन और आफ्टर द सेशन. ओके, बट प्लीज मेक श्योर कि you start practicing from the day one itself, like from today. Sure. Yeah. So tell me one question. Yeah. When we both the examples, one with G and one with C, Right. those are opposite vowels that has a opposite sound, right? Like the first one, I think if you move to C, Mhm. yeah. So I think AOU has a K sound for Right. C instead of S. Right. Right? Mhm. And okay, so G has a different one. Is it AOU or something else? AOU. Same. Okay, but then it's not K, it's G, right? It's G. Right.
Okay, so whatever the usual sound of that letter, like for G it was kh, right? Right. Kha or something. And sorry, it was K or something, right? Yeah, And got your point. Like you are saying that the usual sound of the sentence forms with I and E. okay, Yeah. yeah. And I other mean, like than that, if they in come, general, like if you look at word, I mean, it makes sense, right? El right. gato, you can see, but this El gimnasio it will not click immediately. So, Yeah, I mean, definitely. It's how do gym. you generally remember? It's just about a practice or like, Yeah, uh, definitely. It's just about practice and like starting में you will got like confused definitely. ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा हुई थी, बट धीरे धीरे हमें वो अपने आप ही लैंग्वेज में आ जाता है, वो अपने आप ही आ जाता है काइंड ऑफ कि, बट वो प्रैक्टिस से आता है सिर्फ, जितने आप वर्ड्स पढ़ोगे, जितने आप चीजें सुनोगे, उससे अपने आप ही आ जाता है। हमें देखने की हर बार ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये आई के साथ कंबाइन हो रहा है या ई के साथ हो रहा है, वो अपने आप नेचुरली आ जाता है। बट या यू लिटरली नीड प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी, तो उस चीज को इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, होता है स्टार्टिंग में सब कंफ्यूजन होगी, बट okay. या But it's the same logic. Like I and E would be राइट pronounced as the opposite of whatever the actual letter sound is राइट for राइट राइट for every such thing. Like whether it's for letter C or letter G. राइट राइट, Okay, बहुत these okay, होते हैं एक्चुअली। या okay. ओके, Fine. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेटर जे? Kota. खोता, राइट। सो अभी हमने देखा था कि जी भी खा साउंड प्रोड्यूस करता है और हमारा जे लेटर भी खा साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये इसके पास कोई अदर साउंड नहीं होता, मींस ऑफ जा एंड समथिंग, नो। जे ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ख, a e I o u, any vowel, it always produces the sound of kh. So please read these words. El Khardin, Nice. El Khefe, El Khikama, Right. El Khoven, Right. El Khugete. Right. Very nice. Very nice. ठीक है? But these are so difficult. I mean, in terms of like when I look at those El Khardin, you it won't click you like it's garden. I mean, some of them are pretty straightforward. Like okay, the train they will have like tren, TREN. I mean, it's Right. Right. slightly simpler. Like bus, they call it auto bus. Yeah, like there are lots of words which are similar to English, which are very similar to English. But yeah, there are definitely Spanish is like other language, so there are a lot of words that are like of itself, and It's different as compared. Okay, yeah, very yeah, because different. for bank also it's like banco or something. El Yeah, banco. it's banco. And Yeah, banco banco. is used for like two vocabs. One is bank and second is bench also. It's banco. Bench. Oh, Right. I see. Yeah. Okay. I think someone's mic is open, so I'm getting confused if you're asking me something or I don't know what. Is there only Dhaval in the class? Why you all guys are not like interacting and taking participation? I'm here, ma'am. प्लीज, मतलब खुद से वही अभी मैंने बोला था कि वी आर नॉट लाइक, मतलब छोटे बच्चे नहीं है ना, सो अभी खुद से बोलना है। ओके, ओके। सो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इसको, जैसे था ये जी वाला वर्ड, द लास्ट वन एल एंड ला, गिया, गिया। सो इसको हमने गिया क्यों बोला, इसको हम लाइक कुछ और भी तो बोल सकते थे। सेम विद दिस, सेम विद दिस खुगेते, जी यू ई, हमने इसको गे क्यों बोला? सो हियर कम्स दिस कॉन्सेप्ट,
इसको प्लीज लाइक कहते हैं ना कि रटना, ऐसा कर लेना इसको बहुत अच्छे से. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. ओके, सो GUE is gay, GUI is gee. Same. QUE is K, QUI is key. Okay. जहां पर भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड यही रूल लगेगा. GUE गे, GUI गी, QUE के, QUI की. सिंपल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, H is always and always silent in Spanish. Okay. Yeah. इसका कोई एग्जांपल देगा? A word starting with the H. Mm, Mm, word starting with H. Hola, hola, hola. होला, right. Yeah. So it is, हम उसको होला नहीं बोलते. We always say it as ola. Hola. Yeah. Ola. Right. right, ma'am. H is It's just silent. always and always silent. Okay. So अभी तक कैसा लग रहा है? थोड़ा सा टिपिकल या लिटिल बिट इंटरेस्टिंग और व्हाट? अभी तक तो डिफिकल्ट है. हाँ, Yeah, it's tricky, few things, but yeah, it's interesting. I think those words, like especially like so just it's a now, first class. मतलब धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी. yeah, It just need your time. अगर yeah, क्लास से अलग आप हाफ एन आवर या 1 आवर भी देते हो ना, मतलब 15 मिनट्स लगेंगे सिर्फ क्लास को रिवाइज करने में. जो भी हम क्लास में करते हैं उसको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे बस उसको रिवाइज करने में. उसके बाद आप खुद से देखो. मैं 1 घंटा तो मतलब निकाल सकते हैं ना, अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो देख लो. इफ वी आर इन मेट्रो और इन कार, मतलब कुछ भी ठीक है, वी कैन टेक लाइक, हमें 1 घंटा निकालना पड़ेगा. सो इतना भी हो रहा है ना 1 घंटा डेली का क्लास से अलग. इट इज मोर देन इनफ. ओके मैम. या बट यू हैव टू प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएंगी चीजें. ओके, सो here are some greetings. Can someone read this? shall I go ahead? Somebody else. Um, If someone someone else? else wants- First is easy, which is Ola, but second, Just try, just try. आप गलत ही तो बोलोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना. But just try. Language is all about speaking. अगर speaking ही नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा? कोई बात नहीं. Is it like Buenos dias, Right. Buenos dias. Buenas tardes, Very nice. Buenas noches, Very nice. ¿Cómo tú estás? como tú estás? Estas, estas, yeah. There's a like, sorry, there's an error just of estas. It is estas. como tú estás? मैं correct करके भेजूंगी ग्रुप पे. okay ma'am. Okay. ¿Cómo está usted? Very nice. ¿Qué tal? के ताल अभी हमने देखा. Yeah, yeah, Q is K. Q is K. fine. ¿Qué tal? के ताल. Adiós. Adios. Very nice. सभी को पढ़ना है ये, ठीक है. इट्स नॉट लाइक अभी चॉइस नहीं है. You guys are not participating. I don't know why. It's Sanjana and who else? Bhuvnesh. Please just try to speak. Sure ma'am. Yeah. It's Ola. Then second is Buenos dias. Buenos dias. एक चीज का ध्यान रखना, स्पेनिश में वर्ड जैसे लिखे होते हैं हम उनको एज इट इज वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं. मतलब इसके अंदर कोई एक्सेंट नहीं लगाते, कुछ नहीं. सिंपली जैसे लिखा हुआ होता है वैसे ही हम पढ़ते हैं. Okay. Right. And third is Buenas tardes. Very nice. Buenas noches, right? Very nice. ¿Cómo tú estás?
Very Estás. nice. ¿Cómo estás usted? Very nice. Cute. Uh, cu- it's like turtle, right? Ketal. Ke- Ketal. Kettle. And Right. last is adios. Adios. Right. Uh, Next, please. Okay, I will try. Sorry. Am I audible? Yeah, please. Okay. Hola and buenos días. Mhm. Um, buen- buenos, buenas tardes. Buenas noches. Right. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está usted? Very nice. ¿Qué tal? Adiós. Okay. 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 Very nice. Okay. So, hmm. Okay. So, wait. इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले. So, Ola means hello. Okay. ये सभी को पता है. Next is Buenos dias. Good morning. अब से आप प्लीज गुड मॉर्निंग बोलोगे तो प्लीज से buenos dias. And for good evening and good afternoon, always say buenas tardes. So from tomorrow, जब भी like whenever you enter in the class, just say buenas tardes or buenas noches. मतलब इन चीजों को, इन words को just start practicing in your daily life. So it will become very easy now. Okay. So buenos dias, buenas tardes for good evening and good afternoon both. And next one is buenas noches for saying good night. Next, if we want to like हम किसी पूछना चाहते हैं like how are you but in a informal way then we say como estás और या फिर como tú estás and second अगर बहुत ज्यादा ऑफिशियल कोई मीटिंग है या बहुत ही ऑफिशियल वे में तो हम बोलेंगे como está usted usted como está usted या फिर सिर्फ como está. Next one is ketal. Ketal is like very of like बहुत ही commonly used है in Spain and Spanish speaking countries. Like they always say like ketal, like ketal chico, ketal hombre, like what's up man, what's up guy, something else. ठीक है तो जो भी मतलब बहुत चीजों को बोलने के लिए वो केताल का यूज करते हैं. So ketal is all about what's up. Okay. So मतलब हम como estás इन सब जगह पे हम ये बोल सकते हैं ओला qué tal. Okay. Next is adios which means goodbye. It doesn't mean a proper goodbye जैसे कि हम इंग्लिश में समझते हैं goodbye means कि बस अब हम नहीं मिलेंगे but ऐसा नहीं होता. So adios वो generally भी बोलते हैं. One is ciao also. Ciao is another word to say bye but it is adios. Adios means bye or goodbye मतलब कुछ भी but goodbye doesn't make sense. They just want to say like a bye with a good warming kind of. It simply means bye. Okay. Then we have other terms. So please read them. I guess you mentioned which is silent, right? So What? H is silent, right? Right. Definitely. So it's hasta luego, Hasta hasta luego. Right. luego, hasta pronto, Right. hasta manan. मन्याना. मैं दो करेक्शन जस्ट आई एम टाइपिंग इन द ग्रुप. ठीक है और मैं इस पीडीएफ में भी करेक्शन करके भेजूंगी. ठीक है बस दो ही थी वो वहां पे एस्तास था और ये मन्याना है. यहाँ पे ए है लास्ट में मन्याना. Okay. जस्ट राइटिंग इन द ग्रुप. Okay. But one doubt. Sorry. Yeah. The way you said GUE and GUI, doesn't that work for LUE and
or whatever, anything pronounced No, with no, lu no, or no. It's only not about that word जो मैंने आपको बताया only था. those three. Yeah, Okay, only those. okay, okay. Thanks. Sorry to interrupt. Oh no, it's okay, it's okay. मतलब आप पूछ सकते हो, just ask. Okay, Thank you. okay. And the fourth one is hasta la vista. Hasta la vista, Hasta la nice. vista. And fifth one is hasta otra vez. Otra. Otra, okay. Otra vez. Right. And then it's en enca and I'm actually Just try. encantato. Encantado. Cantato. Okay. Encantado, right. Then mucho gusto. Mucho gusto, right. Okay. Other, please. Hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, sorry, Yana. hasta la vista, hasta otra vez, Mm-hmm. encantado, uh, Tado. okay, tado, encantado, Cantado. and cantado, sorry, mucho gusto. Ma'am, I have one question. Yeah, please ask. Ma'am, in third line, like if you say the N and there is something written on the top, ma'am, what is that, ma'am? In Hindi, like What is matra, something like N के ऊपर The कुछ third one. The third one. Okay. Wait. Look. This one. मैंने अभी देखो ग्रुप पे भेजा है. one So this N sound is nya. Yeah. Okay. Got it? Yes, ma'am. It's nya. इसको हम न्या बोलेंगे. Like एक तो normal sound है ना का which is na and other is this which is nya. इसको हम बोलते हैं न्या. Got it? Yes, ma'am. Okay. Next, please. Hasta luego. Hasta pronto. Right. Hasta mañana. Mañana. Is it Manana. mañana? And hasta la vista. Right. Hasta otra vez. Right. Encantado. Mhm. Mucho gusto. Very nice. अभी कौन रह गया? Sanjana. Yeah. Yeah, please. Okay. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta la vista. Hasta otra Right. vez. Encantado. Right. Mucho gusto. Very nice. Okay. So अभी हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Hasta luego means see you later. जब हम किसी को लाइक बोल रहे होते हैं, ठीक है. सो अभी जो हमने थोड़ा स्टार्टिंग में देखा था ना, वो काइंड ऑफ सैल्यूटेशंस थी जब हम किसी से मिलने के लिए, जब हम मिलते हैं तब बोलते हैं, और ये काइंड ऑफ फेयरवेल्स हैं व्हेन वी से लाइक जब हम जा रहे होते हैं या किसी को कुछ ऐसा विश करना होता है, बुएनास टार्डेस एंड दिस आदियोस और ये सब, तो तभी हम ये बोलते हैं hasta luego, that means see you later. Hasta pronto means see you soon. Hasta mañana means see you tomorrow. Hasta la vista means until we meet again. That means कि ऐसे बोलते हैं ना कि ठीक है, जब तक मिलेंगे तब तक के लिए, ऐसे कुछ करके. तो जब तक नहीं मिलता इंसान तब तक के लिए काइंड ऑफ ऐसा बोला जाता है hasta la vista, like until we meet again. जब तक हम नहीं मिलते तब तक के लिए hasta la vista. And it is very common in Spain actually. And see you next time के लिए hasta otra vez. Next is nice to meet you. It is encantado, like nice to meet you. Mucho gusto को भी हम nice to meet you में यूज कर सकते हैं, और लास्ट में बोलने के लिए like pleasure meeting you, तो वहां पर हम encantado, mucho gusto दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं.
nice to meet you be, pleasure meeting you be. So we can say both, encantado or mucho gusto. It's our choice. Okay, is there any doubt in this? No. No, ma'am. Okay, yeah, I'll share it. Okay, अभी ये रिप्लाईज हैं. अभी हमने फर्स्ट वाली लिस्ट में देखा था कि como estás means how are you. तो अब हम उसके कुछ रिप्लाईज देखेंगे कि अगर if someone is asking us like how are you, so हम क्या क्या बोल सकते हैं. So please read that. Yo estoy bien. I think Y sounds as J, right? Estoy, right, estoy. No, but yo means Joe. You sounded like Joe, right? Yo Or is and it yo? yeah, it's yo or yo. You can say, Okay. yeah. Okay. Estoy muy bien. Yo estoy genial. No, genial. Genial, very nice. Yo estoy fatal. Yo Fata, estoy fantástico. very Yo nice. estoy estupendo. Yo no estoy bien. Yo estoy mal hoy. Yo estoy bien, pero no mucho. Very nice. Okay, next, please. So it's first is yo esto bien, Mm-hmm. esto mío bien, Estoy muy bien. and yo esto genial, Genial, nice. yo esto it's uh, so how we pronounce this F? I actually skipped from my mind. Which one? The fourth one, yo esto Fantastic. Oh, fatal, fatal. fatal. Okay, fatal. Then yo esto fantastico, Fantastico. fantastico. Yo esto estupendo, pando, right? Right. Then yo no esto bien, Nice. yo esto mal hoy, and yo esto bien pero no mucho. Okay. Next. Okay, I'll go. Yo estoy bien. Estoy muy bien. Yo estoy genial. Genial. Right. Yo estoy fatal. Yo estoy fantástico. Right. Yo no estoy bien. Yo estoy mal hoy. Yo estoy bien, pero no mucho. Very nice. Okay. सभी का हो गया और someone left. Okay. So, yo estoy bien means I am fine. So, if someone asks you ¿qué tal or ¿cómo estás? Then we will reply with, if we just want to say like I'm fine, so yeah, I'm good. So, yo estoy bien. And if we want to say I'm very good, then we will say estoy muy bien. And if we want to say I am great, like great. So it is yo estoy genial. I am terrible. Yo estoy fatal. I'm fantastic. I estoy fantástico. So you can say like fantástico कितना मतलब I like this word. ठीक है, very related to English. Fantástico. Stupendous is also estupendo. Yo estoy estupendo. I am not good और not fine के लिए no के लिए भी no लगता है स्पेनिश में, not के लिए भी no ही लगता है. Okay, so I'm not good, I'm not fine के लिए yo no estoy bien. I am bad today. Yo estoy mal hoy. Hoy means today. And yo estoy bien, pero no mucho. Like I am fine, but not much. ठीक है? So ये हमारे replies हुए towards the question. If someone asks us, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Or ¿qué tal?
what's going on, or how are you, what's up. Okay. And then this comes más o menos, more or less. And if you want to say like asi asi, if you want to say like we are just so so, कुछ बताने का मन नहीं है, like I am just so so, so it's asi asi. And if we want to know, for example, if someone asks us like hola cómo estás या फिर hola qué tal, then we will say sí estoy muy bien or estoy fantástico. But if I want to ask other person too, then I will say y tú and you. And if I want to say it's in a formal way, in informal we will say tu, and tu is similar to Hindi, like okay. So it y tú and you, it's informal. Y usted and you. Okay. So then other person will reply, sí, yo estoy bien también, like I am also fine. So अभी मेरे साथ कोई कन्वर्सेशन करना चाहेगा एक छोटी सी of these 4 lines? From anything? नहीं, अभी जो हमने 4 चीजें पढ़ी, लाइक मैं जस्ट ये पूछूंगी कि ओला के ताल, देन यू विल से कि ओला, पहले तो बोलोगे ओला, फिर बोलोगे estoy bien या estoy fantástico, estoy genial, estoy estupendo, estoy fatal, मीन जो भी बोलना है आपको, ठीक है. फिर मैं बोलूंगी कि वाले, और फिर आप मतलब यू विल आस्क मी कि आई एम फाइन, बट इफ यू वांट टू से लाइक ई तू एंड यू, लाइक आई एम फाइन बट यू एंड यू, then I will reply sí estoy bien también, I'm also fine. So okay, तो start करते हैं. Hola, ¿qué tal? Hola, yo estoy bien. वाले bien. And अभी आपको मेरे से पूछना है ई तू and you. Oh yeah. Sorry. हाँ, it's uh, what was that? Sorry. ई तू या फिर ई E2. usted, whatever. Okay. Okay. E2. Sí, yo estoy bien también, I'm also fine. अब आप you can say gracias or I can say gracias. Gracias. Gracias means thank you. Okay. Okay. So Or okay. No, okay. I'm just thinking what else can be used. Okay. Okay, yeah, we Got can it. say like adios. Okay, gracias, adios. Okay. Adios. Adios. Encantado. Hasta la mañana. See, Yeah. ऐसे करके ना, adios, hasta la mañana, like okay, Yeah. bye, see you tomorrow, kind of Mucho this. gusto. Yeah, Yeah. hasta la vista. Okay, mucho gusto, hasta la vista. Yeah, there are a lot of things. Okay. Yeah. Okay. Um, कोई और ट्राई करना चाहेगा? I can go. Yeah. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola, yo estoy bien. ¿Y tú? Sí, estoy bien también. Gracias. Yeah, you can also say sí, gracias, and like you can say encantado या फिर mucho gusto. Okay. Mucho gusto. Adiós. Yo también. Adiós, hasta la vista. Okay. Okay. Yeah, it was nice. Someone else? Can we just one small question? Yeah. When you say so, why is we pronounce it as E, right? Yeah. But when we looked at letter, it was something like E griega. E So ग्रीक. Yeah. तो हम पूरा नहीं बोलते. We just use the letter E. It's a rule of okay. Spanish. Yeah. So हम Yeah, just but I mean, like, बोलते. how is it in English? Like, if I have to go here, so it's I is pronounced as I. Same way, like A is pronounced as whatever. I mean, sorry, yeah, not a, but yeah, a man or whatever. So you have that same pronunciation, but then why E griega when then why griega comes into picture then? I didn't quite understand that. Like, what's the No, logic it's there? just That it's you don't simply use that. या को हम मतलब E ग्रीक का पूरा नहीं बोलते. Just we say E. Simply E. E means and. Okay, And. okay, Yeah. okay, got it. It's E griega, but we only say this as E. Okay. So Bhuvnesh,
Like, do you want to have a conversation? Ma'am, actually, I need some practice, so we'll do it tomorrow It's for okay. sure. It's okay. आप mistake ही तो करोगे. I'm telling you. I'm telling you. Okay. Just जो भी मैं बोल रही हूँ, just वही बोलो. Okay. If I'm saying like Ola, ¿qué tal? So आपको बोलना है. ये जो अभी हमने देखा. Wait. इनमें से कुछ भी बोलो. Estoy muy bien, estoy genial, estoy fantástico, estoy estupendo. या फिर estoy, sí, yo estoy bien, pero no mucho. कुछ भी. Okay. Hola, ¿qué tal? US to Genial. Muy bien. Okay. And you can ask me now. This one. You can ask me. ¿Y tú? Y tú? Estoy bien también. Gracias. Gracias. Now you can say, okay, gracias या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप. Wait. These things, which is encantado या फिर mucho gusto. Okay, nice to meet you. And we can say next, adios, hasta la vista या फिर hasta otra vez. Okay, ma'am. Got it. Yeah. Okay. Okay. So yeah, I was saying कि just practice what we have studied today. We have discussed about the Spanish sounds, Spanish alphabets, and these very basic vocabs of the like greetings and farewells. Okay, so please revise them. As I said, just take out the 10 to 15 minutes of time from your busy schedule, but please just revise everything. I'll just share you the PDFs and the images. Okay, then just please revise that and try to speak. Try to speak in front of the mirror. If like you don't have somebody to speak with, yeah, you can just speak with the mirror, in front of the mirror. Speak with yourself. So just अभी हमने छोटे से जैसे conversation करी, ऐसे ही you can try by yourself. But yeah, you need to practice, because language is all about practice and is all about speaking. ठीक है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमें फिर आएगी कैसे बोलनी, और लैंग्वेज का तो इसीलिए सीख रहे हैं कि हमें बोलनी है. So yeah, you have to speak. Okay. Okay, And ma'am. please be proactive. And मतलब ऐसा ऐसे overwhelm नहीं होना, इतना पैनिक नहीं होना. गलती तो होगी, it's okay. Like nobody is going to like punish you or say anything bad to you, simply. So just try to speak. Okay. Yeah. Okay, then so we just we are ending our class here. Then we will, yeah. So हम कल करते हैं क्लास. तो अभी मेरे को आप प्लीज ग्रीट मी इन स्पेनिश. अभी जो हमने पढ़ा with those farewells. Gracias. Mucho gusto. Hasta mañana. Hasta mañana. Very nice. Buenas noches. Adiós. Cheers, adios. Okay. Adios a todos. Buenas noches. Hasta la mañana. Happy learning till then. Gracias. Gracias. Adiós.